Good afternoon. Good afternoon. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yeah. So in the first part, we'll discuss about your doubts. Hello, koncha question unnunda? Sir, Indulo fourth. a block of mass M is suspended by a string from the ceiling. So according to this question, is known that a block of mass M, take this capital letter M, is suspended by a string A from the ceiling and another. Okay, 1 minute. Are you able to hear me now? Yes, sir. Yes, sir, we can hear you. So, and it is given that another string B is connected to the bottom of string. So take it as another string B is connected to the bottom of block. B is pulled on steadily. So Mala, if I'm exerting some force F over here, so RM is to find out which that string is going to break first. So we can observe on which string tension is more. So that is going to break first. So assume that tension over here is equal to T1. We can write T1 is equal to F, our applied force. And same as like that, if you're getting tension on the string,
which can take us, let's say this is equal to T2. So over here, weight of this block mg is also acting in downward direction. So the value of T2 will be equal to mg plus T1 or mg plus F. So we can observe that the tension acting on string A is more as compared to that of tension acting on string B. So we can say that string A is going to break first as compared to that of string B. Got it? Sir, first question. A ship of mass 3 into 10 raised to 7 kilogram initially at rest is pulled by a force of 4 into 10 raised to 4 Newton through a distance 3 meter. Assume the resistance due to water is negligible. The speed of ship is. So we can find out the value of its acceleration. Acceleration is equal to force divided by mass. Force is 5 into 10 raised to 4 divided by mass is 3 into 10 raised to 7. So we can write will be equal to 5 divided by 3 into 10 raised to minus 3 meter per second square is the value of its acceleration. Through a distance of 3 meter, then the speed of ship is. Distance is nothing but 3. So we can go for that equation, go velocity चाहिए, so we can go for that equation v square minus u square is equal to 2as. So final velocity का square is equal to initial velocity 0. 2 into a is nothing but 5 divided by 3 into 10 raised to minus 3 into displacement, which is equal to nothing but 3. So we can cancel this. So this will be equal to 10 into 10 raised to minus 2, or you can write this will be equal to 10 raised to 10 raised to minus 3 or 10 raised to minus 2. Got it? Question So 0. 14. 1 minute. So the response is yeah, this is Sir, about yes, sir. It is v They're asking square to is find 1 out the upon value of 100, so v. 0.1. Yeah, 0.1. This will be equal to 0.1. Yeah, or below Question 14. 14. Find the ratio of tension TAB and TBC. The value of F is nothing 300 Newton over here. So over here you can just consider that there is an incline. Sir, and your voice a is block of The voice is breaking. yeah, is Sir, it okay now? Yeah, एक minute. sir, I joined just now. Can you explain that 3 blocks question once again? Yeah, we are going to explain it now. So over here, if it is, if you're having 3 blocks, let's say A, B, and C, find the ratio of T, A, B, and TBC is, okay, they are not mentioned about its mass, right? Yes, sir. So we don't know what about the mass of it. So assume that their mass is same. Assume that इसका mass m है और इसका mass भी m है. इसका mass भी m है. अगर mass different होगा, then the answer will change. Okay. And assume that we are exerting a force F in this direction, and consider that this system is going to move upward direction with an acceleration, let's say that is equal to A. Find the tension T, A, and TBC for F is equal to 300 Newton over here. So actually that Sir, but in the tension, question, it's not Bolo. given that all the 3 masses are same. yeah, that's what I'm saying. Like they should mention the mass over here. Yeah. So mass का value देना चाहिए, mass का value नहीं दिया है. So if you are taking like same mass or सर इक्वल रहेगा तो 1 by अगर 3 mass वगैरह different, वैसा ही रहेगा ना. like actually they should mention the mass. We don't know what about the value of mass over here. हाँ सर इक्वल रहेगा तो फिर सेम ही होगा. Yeah, अगर mass equal है तो इसका जो TAB है वो 2 हो जाएगा उधर. yeah, that we can write this TAB is equal to 2 nothing B but C. m into A, equation number 1.
and अगर TBC देखेगा तो that we can write 2m दोनों into 2m into a रहेगा. अगर मास सेम है तो they will be in the ratio 1:2 या 1/2 0.5 पे आएगा. सर अगर मास सेम है तो बोलो बेटा. सर उसको G sin 30 भी तो लगेगा सर, G/2 पीछे. Yeah, it is kept on an inclined Yes, plane. sir. Sir, in fact, Yeah, TBC पे 2 mu आएगा ना? No, it is over here. Yeah, इसका जो force है वो भी exert करेगा. That we can take it as mg. थीटा का 30 दिया ना, तो sin 30 we can take it as 1/2. तो इसका वैल्यू mg/2 हो जाएगा. pi. और इस पे भी वैल्यूज रहेगा. That is equal to mg/2 अगर मास सेम होगा. सर कैंसिल ही होएगा ना वो भी. Yeah, for that purpose we should know. नहीं वो इसका मतलब जो मास का वैल्यू पता होना चाहिए. Then only we'll be able to exactly find out the answer. Otherwise हमें इसके लिए ऐसा इक्वेशन लिखना पड़ेगा. TAB minus mg divided by 2 is equal to m into a. And if you like to find out the value of this acceleration, we should know what about the value of actual mass of that. Because f का वैल्यू पता है तो हम लोग इसका m का टर्म में आंसर मिलेगा, मतलब है ना. And for the second one, if you're writing the equation, we'll get it as something like this. This is equal to TBC minus TAB is equal to nothing but m into a. Equation number 2. इसका equation number 1 और इसका equation number 2 लेना पड़ेगा. And minus of इसका mg का component भी आएगा. तो we can write TAB minus mg divided by 2 is equal to m into a. Equation number 1 and equation number 2 ऐसा लिखना पड़ेगा. And ये जो acceleration है पूरा ब्लॉक मिला के, अगर ये सब मिला के हमने एक ब्लॉक कंसिडर कर रहा है of mass 3m, तो force acting along this direction will be equal to 3mg divided by 2, and force acting along this direction is given as something like f या कुछ 300 ऐसा कुछ दे रहा था. 300 is given. So we can write the equation for this acceleration is equal to 300 minus 3mg divided by 2 divided by mass of that we should write that is 3m. तब को हमको जो आंसर है वो m का टर्म में आएगा. तो actually they should mention the value of mass over here. सर बोलो बेटा. सर ये इक्विलिब्रियम में लिया तो भी आ रहा है आंसर, मतलब जितनी फोर्स They are not mentioned. It is in equilibrium. They were not mentioned that is in equilibrium. हो सकता है equilibrium. Actually they should mention equilibrium में है कि नहीं, इसका मास क्या है, सब बताना चाहिए. अगर equilibrium में है तो TAB का वैल्यू क्या रहेगा, mg sin theta mg/2 रहेगा. TB का वैल्यू क्या रहेगा, मतलब 2mg मतलब mg रहेगा. So they will be in the ratio like 1:2. यस सर आंसर क्या 0.5 दिया इसका? 0.5 सर आ रहा है सर, इक्विलिब्रियम में लिया तो. या इक्विलिब्रियम में लिया तो आ सकता है. तो they might be like it might not be in equilibrium. Actually they should mention it. बोलो. सर 12th one. थर्ड. ठीक है, तो मेरा एक दोस्त है वो भी है. हाँ Over here twelfth one is when that a disk of mass 100 kilogram is kept floating horizontally in air by firing bullet, each of mass 5g, which 5 gram with the same velocity at the same rate of 10 bullets per second. Bullet rebound with the same speed in opposite direction. The velocity of each bullet at the time of impact. So over here is going that a disk of mass 100 gram. Assume that we are having an object of mass 100 gram is kept floating horizontally by air. Means इसका जो weight exert करेगा, that we can take it as 100 into 10 raised to minus 3 kilogram into 10. So we can try this will be equal to nothing but 1 Newton का force exert कर रहा है downward direction. But this is not moving downward direction because the force exerted by the bullet is keeping this one in equilibrium position. So we can say that the force exerted by the bullet on this object should be equal to 1 Newton. Now,
by bullet, each of mass. Now bullet is hitting on the surface. Let's say mass of bullet is m, is hitting on the surface with a velocity v, and after collision it is coming back with the same velocity v. So we can find out what about the value of force exerted by this. The same rate of 10 bullets per second. So if you are taking time is equal to 1 second, then the number of bullets hitting over here is 10. The bullet rebound the How same did speed you in opposite direction. find force as 1 Newton? I didn't understand that. It is keep us 100 gram at rest. So if you like to keep an object of mass m at rest, then we need to exert a force of mg in upward direction, right? Yes. So that mg is nothing but 1 Newton. 100 gram. 100 into 10 raised to minus 3 into 10. तो वो जो ब्लॉक है वो रॉड है वो नीचे नहीं मतलब डिस्क है वो नीचे नहीं गिर रहा सर सूडो बिकॉज फोर्स बुलेट लगाया उसके क्या ऊपर आपने? 1 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर नहीं 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 ये जो बुलेट है उसके Okay, ऊपर okay, हिट okay, कर रहा है okay. that- हाँ. that is keep on So exerting what force on it is this exerting? yeah bullet is exerting a force of 1 Newton on it. Okay. Hmm. So RM is to find out value of velocity of bullet time of impact is like जो v का value find out करना है. So you can go for that equation. F is equal to m into a, and this a is equal to v minus u divided by t. And over here, n number of bullets are hitting in a time of 1 second. So if you're taking time as 1 second, so this will be equal to n into m into v का value था 10 and u का value था minus 10. So we get as 10 minus 10, 10 minus of minus 10, that is 10 plus 10 divided by time we are taking it as 1 second. So write the value of this 1 Newton is equal to nothing but n का value दिया है n, m का value plus में दिया था 5 gram. So we can take it as 5 into 10 raised to minus 3 into 20. So we can find out okay velocity 10 नहीं दिया है okay velocity v दिया है sorry उसका जो velocity है वो v दिया है. So we can write this force is equal to n into m into v minus of v. So we can take it as 2v divided by time is given as 1 second. So this force is given as about 1 Newton. So we can write 1 Newton as value 5 तो 5 into 10 सर raised to minus 3 आपका आवाज ब्रेक into हो रहा है 2v. बहुत. अभी ठीक है क्या? Yes, sir. So जो n का वैल्यू है सॉरी v का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. This we can write 1 is equal to 5 into 2 10 हो गया तो this is 10 raised to 2 into 10 raised to minus 3 into v. So we can write this value of v will be equal to 1 divided by 10 raised to minus 1, or you can write v is equal to nothing but 10. Got it? सर 10⁻² कैसे आया? मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई 2 into 2. ओके अच्छा. थैंक यू सर. और बोलो. Sir, third question. Yeah. Third one, it is given that a block of mass m kept on a smooth inclined plane of inclination theta. The force exerted by the plane on the block has a magnitude. Force exerted by the plane on the block, we can write, let's say if you are having a block of mass m over here, तो इसके ऊपर force exert करेगा by gravity, that we can write it as mg. Other than that, the force exerted by the block surface on the block, that we can take it as normal reaction n. So they are asking to find out what about the value of normal reaction over here. So we can resolve this mg into its components. If this angle is equal to theta,
component of mg along this direction will be equal to mg cos theta, and this component will be equal to mg sin theta. So you can write the value of normal reaction will be equal to mg cos theta. Got it? 30 question. Sir, 9 and 10. Ninth one, it is given that rocket fuel burns at the rate of 1 kilogram per second and eject with a velocity of 48 kilometer per second, and the force exerted by the exhaust gas on the rocket is. तो हमने डिस्कस किया था in case of rocket propulsion, वो जो mass varying case है, Yes, so sir. the value of F exerted by that will be equal to M into M into V into V into dm dm divided by dt. theta. तो जो v का वैल्यू है वो दिया था 48 किलोमीटर पर आवर, तो we can write 4 किलोमीटर per second. तो v can be written as 48 into 10 raised to 3 meter per second into dm by dt, 1 kilogram per second, so into 1. So this we can take it as 48000 Newton. This is a force exerted by that. And sir, also 10th question. Yeah. Tenth one, it is given that an open knife edge of mass 200 gram is dropped from a height of 5 meter on a cardboard. The knife edge penetrates a distance of 2 meter in the cardboard. The average resistance force by the cardboard to the knife edge is. So over here it is given that a knife edge of mass 200 gram. Assume that an object of mass m from a height of h, which is given as nothing but 5 meter, and इसका जो mass दिया है 0.2 kilogram at a distance of 2 meter dropped from a height of 5 meter. उसके बाद कार्डबोर्ड से अंदर से पास कर रहा है and वो penetrate हो गया to a distance of 2 meter over here. Okay. So when it is hitting over here, it is going to hit the surface with some velocity v, and वो जो velocity है या u से hit किया था वो decrease करके इधर velocity क्या हो गया, 0 हो गया. So we can find out the value of acceleration. From that we can find out what about the value of average resistance force exerted by this. So first we can find out what about the value of velocity on reaching over here. If an object is dropped from a particular height, velocity on reaching the surface will be equal to root of 2 into g into h. This will be equal to 2 into 10 into h का value दिया था क्वेश्चन में 5. तो इसका value क्या होगा, 100 का root, that is equal to 10. Now in this situation initial velocity था 10, final velocity हो गया 0 and displacement दिया 2. So we can find out what about the value of acceleration by using that equation v square minus u square is equal to 2s. So final velocity हो गया 0, initial velocity हो गया 100, u का square 100, and 2 into a into s, displacement हो गया which is nothing but 2 over here. So we can write the value of this deceleration will be equal to 100 by 4 yeah 25 yeah minus 25. So we can find out what about the value of force acting on it. Force will be equal to mass into acceleration. Mass is given as 0.2 into acceleration is minus 25. So we'll get the negative force acting in -5. upward direction or resistance work, that we can take it as something but minus 5. Sir, acceleration Sir, will can be you 35 Bollywood, please yeah. explain plus this 10 again once? of gravity. 10 of what of gravity? Yes, sir, 10 of gravity. Then the answer will be 7. समझा नहीं, एक और बार बोलो. ग्रेविटी का 10 ही लिया ना हम लोग. नहीं सर, वो फाइनल आंसर में जब सर अपन ऑप्शन फोर्स में तो निकालेंगे, 7 है ना, 7 5 तो है ही नहीं. जब फोर्स निकालेंगे, जब ग्रेविटी का भी Okay, okay. एक्सेलरेशन So ऐड इसका करेंगे. yeah. इसका जो this is a force exerted opposite to that of this one, the acceleration. At the same time इसका weight भी exert कर रहा है. ये जो object का weight है वो भी exert कर रहा है downward direction में. तो 5 is opposing that velocity. Other than that ये object का weight है mg, which is also acting in downward direction.
तो जो mg का वैल्यू था, m का वैल्यू था 0.2 इंटू g का वैल्यू था 10, तो 2 न्यूटन भी एक्सर्ट कर रहा है बाय द ग्रेविटी, उसको भी अपोज करना है. सो टोटल 5 + 2 दिस विल बी इक्वल टू 7 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा. Sir, can you explain mg वाला part again? मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट एक्सर्ट कर रहा है ना mg, रेजिस्टेंस फोर्स भी एक्सर्ट कर रहा है F. तो इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज करके u से लेके 0 तक कर दिया. तो उसमें से हम लोग क्या फाइंड आउट किया, इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट किया ना. Yes, sir. एंड तो फिर हमारा इक्वेशन कैसे होना चाहिए, F माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए होना चाहिए ना. हाँ. हमने फर्स्ट पार्ट में खाली m इंटू ए फाइंड आउट किया है, तो नेट फोर्स क्या पूछा है, तो दैट विल बी इक्वल टू mg प्लस m इंटू ए. Yes, sir. Okay. Sir, बोलो बेटा. sir, please explain this again. I didn't understand. An object is dropped from a height of 5 मीटर, तो वैसा ही वो नीचे आएगा, उसका वेलोसिटी बढ़ेगा. Hmm. तो when it is reaching over here, इसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड. हाँ. फिर इसके अंदर से जाएगा तो ये सरफेस इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा. हाँ. Because of that, its velocity is going to decrease, and after some time, its velocity will be equal to 0. Hmm. So we are finding out what about the value of external force exerted by this surface over here. Okay. So if we are considering an object which is moving in downward direction, so इसके ऊपर जो force exert कर रहा है वो mg exert कर रहा है, और जो external resistance force F exert कर रहा है upward direction में, and assume that it is moving with an acceleration a in upward direction, इसलिए वो deceleration में है. Downward Sir, तो direction वो में mg deceleration या वो upward knife direction में का acceleration. surface पे है क्या? mg is a Knife. force exerted by gravity on knife. Yes. Force exerted by gravity on knife. Sir, but This F is, I'm having a doubt. It बोलो. will exert the equal force, right, in the opposite direction. नहीं नहीं, this ये जो मास m है उसके ऊपर ग्रेविटी एक्सर्ट कर रहा है mg, और वो कार्डबोर्ड से पास करेगा, तो कार्डबोर्ड का सरफेस है वो इसके ऊपर F एक्सर्ट कर रहा Yes. है. Yeah. So it is going to move with a deceleration of a, yeah, acceleration a in upward direction. Hmm. So we'll write the equation for this. F minus mg is equal to m into a. Oh, okay. तो Okay. F का वैल्यू क्या रहेगा, mg प्लस m इंटू ए रहेगा, एंड a का जो वैल्यू है हम लोग को इंफॉर्मेशन से फाइंड आउट कर रहा है, ताकि जब हिट कर रहा था उसका वेलोसिटी 10 था, वो डिक्रीज करके वेलोसिटी 0 हो गया. ओके. एंड उसके लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो भी हमको पता था, कुछ 2 मीटर ऐसा कुछ दिया है. तो we'll find out what about the deceleration with which it is moving by using that equation v square minus u square is equal to 2s. तो फाइनल Okay. वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू 10 का 100 हो गया, 2 इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मान लो 2 हो गया, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू मिलेगा -25 या डिसेलरेशन 25. तो वी कैन राइट प्लस m इंटू ए ओवर हियर, ए का जगह पे 25 पुट कर. Okay. Yeah, got it. Sir, 23. It is given that the least count of stopwatch is 0.5 second. The time of 20 oscillation of pendulum is measured as 25 second. Percentage error in the measurement of time will be. So we know that percentage error means nothing but the value of error divided by actual value into 100, or relative error into 100 will get the value of percentage error. The least count of stopwatch is 0.5, 1/5 second. इसका meaning है the maximum possible error in this time will be equal to 1 divided by 5 seconds. इससे ज़्यादा नहीं होगा. The time of 20 oscillations of pendulum is measured as 25 second. मतलब 20 second करे तो उसमें error कितना होगा, मतलब t का वैल्यू अगर 25 है, so delta t, उसमें जो error है वो 1/5 second होगा. Okay. Now the 20 oscillations of pendulum is measured as this one. The percentage and measurement of time is. Percentage error is nothing but error
divided by actual value into 100 या relative error into 100 कितना था 1/5 second. अभी total time कितना है 25 into 100. So we can write this will be equal to 4 divided by 0.5 or 0.8 is a value of percentage. This much percentage is a value of percentage error. Got it? Maximum possible error will be always equal to least count. What about the minimum distance या measurement that can be taken by using that device? और बोलो. सर चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? चार्ज का हमने I into A लिखता है, sorry I into T लिखता है 80 या ओके current into time. और बोलो. सर 13 क्वेश्चन 13 24. The time period of oscillation of a simple pendulum is experiment is recorded as इसने value दिया है the average absolute error is. पहले they are asking the value of mean absolute error. तो पहले हम लोगों को क्या करना find out करना पड़ेगा. पहले mean value find out करना है. Mean value means we need to add all these observations. तो हमारे पास जो values था they are 2.63 and 2.56 और consider 2.42 and 2.71 and 2.80. So first we need to add it to get the add करना है, फिर उसको divide करना है by the mean value. So that will number of observations, that is 5. So we'll get its true value. उसको हमने true value consider करते हैं. So 6.2 plus 2.63 2.5 plus 2.42 plus 2.71 plus 2.80. So we are going to get the answer as 13.12. So 13.12 divided by number of observations देखना है, that is 5. So divided by 5 करेगा तो we'll get the answer as nothing but 2.624. 2.62 So 2.624. Okay. So 2.624 is a value of its we can say that it's mean value, और इसको हमने true value लेते हैं, इसको हम बोलते हैं A mean. That A mean is taken as nothing but our true value. Then we'll find out what about the value of delta A1, means what about mean absolute error in each observation. So mean absolute error is nothing but mean absolute error is nothing but our measured value minus true value. So true value का measured value है 2.63 minus जो true value है which is 2.624. Okay. So we'll get the value of it इसका जो error है first observation error कितना है वो मिलेगा. So we can write first observation में जो error रहेगा 0.006. Okay. So like that we can find out what about the value of error in each observation. Observation error कितना मिलेगा, and इसमें positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, but always remember that we'll just consider only the positive value. हम लोग उसका negative value consider नहीं करेगा. फिर वो सब find out करने के बाद उसका absolute divided by 5 करना है. तो ये सब mean absolute error को add करके 5 करना है तो आपको मिलेगा what about the value of average value of error, which is known as mean absolute error. Got it? उसका negative value नहीं लेना है, like second situation में will get as it is 0.064. ऐसा सब find out करके divide by 5 करना है तो जो value मिलेगा that will be the answer. और बोलो. और कौन सा क्वेश्चन है? 13. A block of mass 10 kg is kept on a horizontal surface. A force F is acted on the block as shown in figure. For what minimum value of F the block will be lifted up? हम लोग इसके ऊपर F exert कर रहा, so we can resolve this F into its components. F का A वाला component होगा F cos 30 और A वाला component होगा F sin 30. अगर ऊपर की तरफ जाना है, so the value of F sin theta should be greater than mg.
Yeah. So we can write this F sine 30. Sine 30 is nothing but 1 by 2 should be greater than mg. Yeah, minimum condition के should be equal to weight mg. तो इसका जो F into this mg we can take it as sine theta can be taken as 1 by 2. Sine 30 mass का value दिया 10 and g का value दिया 9.8. So we can write this F is equal to 2 into 998. Got it. 200 ही लिया 9.8 अगर आप ये लिया तो 98 लिया तो इसका 2 टाइम्स रहेगा 10 लिया होगा. अगर आप 9.8 लेगा तो हमको 96 पे आएगा 196 पे आएगा. सर पर 200 से ज्यादा होना चाहिए ना लिफ्ट करने के लिए. हाँ 200 से ज्यादा या 196 से ज्यादा. तो मिनिमम फोर्स कितना है पूछे तो विल राइट इट एज इक्वल टू mg लिखेगा. मतलब 196 का वैल्यू लिखेगा हम लोग. या इधर 10 लिया होगा तो इसलिए 200 लिया. और बोलो 14%. 14 में हमको इसका मास पता नहीं है. अगर इक्विलिब्रियम में है तो we'll get the answer. Like if you are considering this one is on an inclined plane, actually question में इसका मास मेंशन नहीं किया है. अगर इसका मास m है और इसका मास भी m है और इधर का जो टेंशन है वो T1 है और इधर का जो टेंशन है वो T2 है, तो इसका जो वेट एक्सर्ट करेगा, वेट का कंपोनेंट एक्सर्ट करेगा mg sin थीटा और इधर भी एक्सर्ट करेगा mg sin 30. तो जो अगर ये एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है तो T1 का वैल्यू क्या होगा mg sin थीटा होगा या mg by 2 होगा. तो जो T2 का वैल्यू है ये T1 plus mg by 2 रहेगा. तो दोनों मिला के mg रहेगा. mg हो रहा है. So they will be in the ratio 1:2 या 1/2 0.5. अगर if it is in equilibrium. अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो वो मास का वैल्यू पता होना चाहिए, which is not mentioned. Even in this situation also we should know the value of mass. We assume that mass is constant. दिया था बोलो बेटा. वो फोर्स क्यों दिया था इधर लिखा था F equal to 300 न्यूटन. या अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो लाइक उसका कुछ यूज हो सकता था. ओके. अदरवाइज इसका मास देना चाहिए था ताकि वी कैन फाइंड आउट वेदर इट इज गोइंग टू एक्सेलरेट और नॉट. बट इसका मास दिया नहीं है तो वी कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन ओवर हियर. और बोलो Sir, 17. Question. a quantity x is given by eta a dv by dy, where eta is coefficient of viscosity of fluid, a is area, delta v is change in velocity and delta y is change in height. Dimensional formula for x is same as that of a quantity x is given by, तो इसका actually dimensional formula ही लिखना है. So I think you might not be knowing the dimensional formula for this coefficient of viscosity, right? Yes. तो x is eta a delta v divided by delta y. तो coefficient of viscosity actually जो resistance force है, viscosity is the resistance force between different layers of liquid. उसके लिए equation होता है eta into a into dv divided by dx. where dv by dx is known as velocity gradient. Okay. तो ये जो eta का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो f डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला होता है. सो वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ eta it is force into distance divided by area into change in velocity into area into change in velocity by distance. तो ये क्या होगा, ये दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, कैंसिल हो गया. ये दोनों कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया. तो x का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ रहा है, f का डायमेंशनल फार्मूला ही आ रहा है. तो सेम एज लाइक द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स. इसके लिए वो कोएफिशिएंट ऑफ मतलब वो विस्कोसिटी का इक्वेशन हमको पता होना चाहिए. और बोलो Sir, 5th question. Sir, 10th one. Fifth one, it is given that a machine can fire 10 bullets per second, each of mass 10 gram. The speed of each bullet is 20 centimeter per second. The force of recoil is.
So you can write the value of force is equal to mass into acceleration, mass into v minus u divided by t. So take it as time as 1 second. तो 1 second में 10 bullets fire कर रहा है, तो mass का value होगा 10 into mass of 1 bullet. So we can take it as n into m. N is 10 and m is mass of bullet is 10 gram. So 10 raised to minus 3 into v. Speed of bullet is 20 centimeter. तो initially 0 था, अभी 20 हो गया, 20 centimeter per second. So we can write 20 into 10 raised to minus 2 meter per second. Minus initial velocity 0 divided by time is taken as nothing but 1 second. So we can find out the value of force over here. तो क्या मिलेगा 20 into या 2 into 1 2 3 वो इसके साथ कैंसिल होगा 2 into 10 raised to minus 2 न्यूटन या तो उसको मतलब डाइन में वैल्यू दिया होगा 2009 2009 yes 6 1 sir. a block of mass 2 kilogram is placed on the floor. A force of 2.8 newtons applied on the block parallel at an angle of 30 degree from horizontal. Is applied on the block parallel at an angle 30 degree from horizontal. Then acceleration of block is. Sir न्यूटन में दिया ऑप्शन. I think that force might be making some angle 30 degree with respect to the horizontal. Okay. I don't know what about this like say statement parallel over here. Sir, कुछ क्वेश्चन Block में of- wrong लग रहा है कि Yeah वो यूनिट न्यूटन ये दिया है. parallel term का कुछ मीनिंग तो Sir, parallel का कुछ parallel- मतलब कंसीडर नहीं किया और सिर्फ 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से किया तो आ रहा है आंसर 1 हाँ आंसर सर आ रहा है पर वो न्यूटन दिया है सर एक्सेलरेशन का यूनिट भी वो पैरेलल में भी डाउट था. ओके या मतलब वो न्यूटन पर मतलब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में देना चाहिए ऐसे. हाँ ये 2 किलोग्राम आएगा, ये 2.8 न्यूटन और इट इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री. सॉरी 2.8 मेकिंग एन ऊपर एंगल होगा 30 डिग्री. हाँ यस सर आ रहा है तो वी फिर कैन जस्ट फाइंड आउट या इसका cos 30 मतलब 1.4 ये ऊपर तो नहीं जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स राइट. तो दिस 2.8 into cos 30 तो √3 divided by 2. So 2.8 into cos 30 is √3 by 2 by 2. So that should be the answer. ओके सर. और बोलो. Sir, 8th question. हेलो सर और कुछ क्वेश्चन में डाउट है? Sir, 8th question. Yeah. 1 minute. स्क्रीन क्या भी? Yes, sir. Yeah.
Eighth one, it is given that the ratio of weight of man in stationary lift when it is moving down with the uniform acceleration A is 3/2. A is, तुमको पता है लिफ्ट के अंदर है पर्सन, तो हम लोग को स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो उसमें क्या दिया है, रेशियो ऑफ वेट ऑफ मैन इन स्टेशनरी लिफ्ट. अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तो वेट का वैल्यू क्या रहेगा, mg रहेगा. एंड व्हेन इट इज मूविंग डाउन है तो स्यूडो फोर्स किधर रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा. तो वेट कम हो जाएगा, तो m इंटू जी माइनस ए हो जाएगा वेट, है ना? तो इसका जो रेशियो है वो 3/2 दिया है, मतलब mg डिवाइडेड बाय mg माइनस g माइनस a is nothing but 3/2 g. Okay, so the value of a is 3/2. तो फाइंड आउट करना है a का वैल्यू कितना है. तो you can write g divided by g minus a is equal to 3 divided by 2. So we can write this 2g is equal to 3g minus 3a. So we can write this 3a is equal to nothing but g. और a का वैल्यू क्या मिलेगा, g/3 होगा. समझा? Yes, sir. Sir, can you explain that weight is equal to m into g minus a? Lift is moving in downward direction with an acceleration a. तो लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो स्यूडो फोर्स किधर रहेगा, ऊपर रहेगा ना, ऊपर में रहेगा. हाँ. तो वेट कितना रहेगा, mg. तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना आएगा, n Okay. माइनस Yes, sir, got mg. या और बोलो. Sir, 18 question. The dimensions of a by b in the equation p is equal to a minus t square by bx, where p is pressure, x is distance and t is time r. तो a का डायमेंशन और b का डायमेंशन हमको चाहिए. तुमको पता है जो भी टर्म्स है, if they are were separated by equal to addition or subtraction sign, that term should have equal dimensional formula. मतलब a का dimensional formula और t square का dimensional formula सेम होना चाहिए, because a minus t square लिखा है. Yes, sir. तो a का dimensional formula क्या आएगा, t टाइम है तो इसका t square आ जाएगा. Sir. Like that p का dimensional formula और a और t square का dimensional formula सेम है, divided by b x का dimensional formula सेम होना चाहिए. तो b का dimensional formula हो जाएगा a divided by p into x. और इन क्वेश्चन डायरेक्टली a by b का डायमेंशनल फार्मूला ही पूछा है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकता है, इतना करने का जरूरत नहीं है. वी कैन डायरेक्टली राइट a डिवाइडेड बाय b का डायमेंशनल फार्मूला शुड बी इक्वल टू p इनटू x का डायमेंशनल फार्मूला. एंड Yes, p को sir. क्या दिया, प्रेशर दिया है. प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू x. फोर्स क्या होता है, mass into acceleration, ml t raised to minus 2 divided by area क्या रहता है, ml square, and distance क्या रहता है, l. So we can cancel this, so it will be equal to m t raised to minus 2 l. सर आपने इक्वेट कैसे किया, कर सकते हैं क्या वैसे? इक्वेट मतलब मैंने डायमेंशन को इक्वेट किया है. Sir, how did you write a minus t square is equals to 0? I'm not writing a minus t square is 0. So how did you get a is equals to t square? I'm writing dimensional formula of a is equal to dimensional formula of t square. Okay. So then only we can add. Okay. Yeah. Yeah, subtract. when only we can add is a minus t square का dimensional formula और a का dimensional formula same है. तो Yes. dimensional formula of this term by dimensional formula of bx should be equal to dimensional formula of pressure. ऐसा. Okay. और कुछ क्वेश्चन डाउट है? Question number 20. Dimensional formula of relative density is. Relative density means density of object by density of water. तो density by density कर रहा है तो क्या dimension less मिलेगा ना बेटा? Yes, sir. m raised to 0, l raised to 0, t raised to 0. Dimension less quantity. Okay, thank you. Sir, 19th.
एंड 10th वन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया रहता है, Yes. तो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम गलत है, ये गलत है, एनर्जी गलत है, तो ये होना चाहिए। स्क्लिप करके दिख सकता है, फोर्स एनर्जी इज वर्क इनटू टाइम, वर्क इनटू वर्क इज इक्वल टू एनर्जी इज वर्क, Hmm. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Yes. वॉल्यूम का क्या रहेगा, एरिया इनटू मतलब लेंथ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, फोर्स बाय एरिया प्रेशर का डायमेंशन में आएगा। और कुछ क्वेश्चन डाउट है? Yes, sir. If error in the measurement of radius of sphere is 2%, then the error in the error in the determination of volume of sphere is, वॉल्यूम क्या रहता है बेटा, 4/3 पाई r क्यूब रहता है ना, Yes, तो sir. r/3 है, तो वी कैन राइट 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन r रहेगा ना, Yes, फिर sir. इस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन कितना था, 2 था, तो पूरा मिला के 6%। So बोलो बेटा। neat paper. या AIT के पेपर में और कुछ क्वेश्चन डाउट है? नहीं सर। No, sir. No, sir. बोलो बेटा, नीट के पेपर में क्या डाउट है? 27th question. 9. 27, it is given that density of interstellar medium is about 1 hydrogen atom per cube. Imagine a 1,000-ton 4 into 6 meter classroom size interstellar space craft traveling at 6,000 kilometers per second on its way to Proxima Centauri, the nearest solar system of 2 hours, this much 4.248 light years. Determine the momentum of spacecraft is. Momentum is basically mass into velocity. So we need to find out what about the value of mass and multiply it with velocity. So density is given, and so we can write this momentum is mass into velocity, and density is given, the mass can be written as density into volume into velocity. Density density into volume, we can take it as area into like length into velocity. Medium is about 1 hydrogen atom per cubic. Density of interstellar medium is about 1 hydrogen atom per cubic. मतलब I think 1 meter cube में about 1 hydrogen atom. तो 1 hydrogen atom का मास कितना होता है? इसका जो मास नंबर है, that will take it as nothing but 1, right? So 1 hydrogen atom per cube, मतलब उसका जो डेंसिटी है, that will be equal to mass of hydrogen atom per meter cube ले रहा है. Imagine a 100,000 ton 4 into 6 meter. एक्चुअली तो मास में हो गया और एक मतलब डायमेंशंस हो गया, उसका हाइट नहीं दिया है अगर हम लोग डेंसिटी फाइंड आउट करना, सॉरी वॉल्यूम फाइंड आउट करना। तो टन 4 into 6 meter. सर डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते क्या, मास 1000 टन है और जो स्पीड है वो 60,000 किलोमीटर पर सेकंड है, हो गया, मोमेंटम आ जाएगा नहीं, उसका मतलब इमेजिन 1000 टन, मतलब वो किसका मास दिया है वो पता नहीं है ना, मीडियम का मास दिया है कि क्या दिया है वो पता नहीं है ना।
अगर ये डायरेक्टली इसका मास ही स्पेसक्राफ्ट दिया का दिया है है ना सर, 100 वो स्पेसक्राफ्ट का मास है ना सर। an image on the turn response meter classroom size and the spacecraft traveling this one on the way of response in this one. स्पेसक्राफ्ट का मास भी दिया है और स्पीड भी दी है ना सर। determine the momentum of spacecraft. अगर इसका मास डायरेक्टली दिया है तो ये जो सब इंफॉर्मेशन से कुछ मतलब नहीं है इसका। हाँ सर। डायरेक्टली हम लोग m into v कर सकता है। 100 टन 1000 टन into उसका वैल्यू मतलब वेलोसिटी का वैल्यू क्या दिया है 6000 ओके ऐसे दिया है तो 6 into 10⁻13 में ही आएगा वो। सर 10:10 आता है। सर टन को किलोग्राम किया तो हाँ टन को किलोग्राम करना ही पड़ेगा बिकॉज ये जो 1 टन इज 1000 किलोग्राम है तो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻3 into 3 मतलब 10⁻3 मतलब 10⁻6 दिस 10⁻6 into वेलोसिटी क्या दिया 6000 वो किलोमीटर पर सेकंड में दिया है तो उसको मीटर पर सेकंड में मीटर कन्वर्ट में करना कर पड़ेगा into 5/18 कर दो तो this will be we can take it as 3 तो 5/3 which is 1.6 into उसका कुछ मल्टीपल में आएगा प्लस 6 में नहीं 6000 में नहीं 6 into उसमें नहीं आएगा the nearest solar system is light year away determine the momentum of spacecraft is अगर इसका मास कंसीडर करें डायरेक्टली तो यही आंसर आना चाहिए मतलब 1.6 के बाद 1.6 into क्या 1 2 3 4 10 में आएगा ऑप्शन नहीं दिया इनसफिशिएंट सर 5/18 नहीं होगा ना, हाँ, वही तो 5/18 तो 5/18 किलोमीटर पर आवर के लिए होता है ना। 18 बार हाँ ओके सॉरी सर किलोमीटर पर सेकंड 6000 में मल्टीप्लाई होगा। हाँ सिर्फ 1000 मल्टीप्लाई होगा सर। या तो वी कैन ट्राई 10⁻3 ओवर हियर तो क्या होगा 3 9 10 11 12 13 या 6 into 10⁻13 Third option. या सर यही पेपर में क्वेश्चन नंबर 22 string of negligible mass going over a clamped pulley of mass m supported block of mass m as shown. The force on the pulley by the clamp is given by. So RM is to find out what about the value of force exerted by the clamp on the pulley over here. So अब देखो ये जो पुल्ली अभी रेस्ट पे है अभी पुल्ली के ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इसका वेट एक्सर्ट कर रहा है mg एंड इधर का जो टेंशन है दैट विल बी आल्सो इक्वल टू mg एंड इधर का जो टेंशन है दैट विल आल्सो बी इक्वल टू mg और इसका वेट एक्सर्ट कर रहा है दैट इज इक्वल टू mg ओके अदर देन दैट वो क्लैम्प पे वो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा ठीक है तो अगर आप पुल्ली को देखेगा the external force acting on the pulley are mg by gravity and this mg divided by tension this mg by tension and इसके अलावा और कुछ फोर्स F एक्सर्ट कर रहा है by the clamp so that net force should be equal to 0 तो हम बोल सकते हैं this F should be equal to vector sum of all these three forces सब ऐड करके क्या 0 आना चाहिए तो we can write F should be equal to this mg and this mg is making an angle of 45 degree okay इसी तरह डायरेक्टली वेक्टर में वो लोग ने ऐड किया है तो फोर्स एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन क्या हो गया mg हो गया फोर्स एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन क्या हो गया m plus m into g हो गया एंड एंगल बिटवीन देम क्या है 90 डिग्री 90 डिग्री तो हम लोग दोनों वेक्टर को ये दो 90 डिग्री पे ऐड कर रहा है तो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हम लोग g को कॉमन ले सकता है बाकी का वैल्यू क्या मिलेगा m plus m the whole square plus m square. Got it? यस सर Yes, sir. Question number 5. Question number 5 is given that the speed of sound v in a gas might possibly depends upon the pressure p, density rho, and volume of gas. Use dimensional analysis to determine the exponent x, y, and z in the formula of y p is equal to c. C is a constant. Okay.
So we can find out by using that like dimensional analysis. तो velocity का dimensional formula c a constant है into p raised to x and rho raised to y and v raised to z. V get the volume of gas. Okay. So we can write dimensional formula, that is velocity का dimensional formula होगा L t raised to -1 should be equal to c constant दिया है and p is pressure. Pressure we can take it as force divided by area. तो force का dimensional formula आता है ml t raised to -2 by area का L square. तो pressure का dimensional formula आएगा ml raised to -1 t raised to -2. So we can write ml raised to -1 t raised to -2 and raised to x into density. Density हमको होता है mass by volume. तो ml raised to -3 raised to y and v क्या आता? v is volume. Volume को क्या रहेगा? l raised to 3 raised to z. अब इसको इक्वेट करके x y z का वैल्यू फाइंड करना. Got it? So question number 9. Yes, sir. A gray is an old English measure of length. It defined as 1/10th of a line, where the line is another old English measurement of length, defined as 1/12th inch. A common measure for the length in publishing business is a point, defined as 1/70th inch. What is an area of 0.75 gray square in points squared is? तो हम लोग को कन्वर्ट करना है one system of unit into another. 0.75 ग्रे स्क्वायर का जो यूनिट है इसको कन्वर्ट करना है is equal to dash in points squared dash point square. तो अब देख सकता है ये जो ग्रे और पॉइंट है उसमें क्या रिलेशन है. तो इसमें दिया है 1 वे is equal to English order measure 1/10th of a line. So this we can take it as line divided by 10. And where line is another old English measurement for length, defined as 1/12th of inch. So line is 1 inch divided by 12. So divided by 10. A common measure for the length publishing the business a point difference 1/7th of inch, and a point is taken as nothing but 1/72th inch. So this is 1 inch divided by 72. अभी हम लोग इसको ये सबको क्या है कि इंच में आ गया तो 0.75 into 1 gray can be written as nothing but उसका वैल्यू इंच में क्या मिला था 1 inch divided by 12 into 10 या 120 का स्क्वायर should be equal to dash मान लो x into point का स्क्वायर, and 1 point is nothing but 1 inch divided by 72 का स्क्वायर. So we can find out what about the value of x over here. The inch square and inch square get cancelled. We'll get the value of x is equal to 0.75 into 72 का square, that is 72 into 72 divided by 120 into 120. That will give the value of x over here. So please explain again. इसमें क्या है कि ऐसा a is equal to b, b is equal to c ऐसा कुछ क्या है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है what about the relation between ये बोल रहे there is a unit called gray which is old English measure for length defined as 1/10th of a line. तो लाइन करके एक यूनिट है, वो लाइन का यूनिट बाय 10 करे तो हमको ग्रे मिलेगा ऐसा बोला है. लाइन एक यूनिट है, वो लाइन इज नथिंग बट
1/12 of inch. तो ये लाइन को आप लिख सकता है 1 inch divided by 12. ओके और ये जो 10 है into 10. तो ग्रे आपको इन टर्म्स ऑफ इंच में मिला. एंड अनदर यूनिट है विच इज पॉइंट. तो वो पॉइंट को ऐसा डिफाइन किया है विच इज 1/72 of an inch. So our aim is to convert into 0.75 gray square into dash n points square. मतलब x, this is equal to x point square. Got it? तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके तो 0.75 into gray in terms of h में हमने फाइंड आउट किया है, इंच में फाइंड आउट किया है, that is 1 inch divided by 120. उसका स्क्वायर is equal to x into पॉइंट हमने इंच में फाइंड आउट किया है, that is 1 inch divided by 72 उसका स्क्वायर. So we can find out the value of x 0.75 into 72 into 72 divided by 120 into 120. Inch square and inch square get cancelled. It will be 0.75 into 72 into 72 divided by 120 by 120. Get around 0.27. So 0.48 आ रहा है. No, 0.27. So 32. Yeah, we'll discuss tomorrow. Okay.